सभी को मेरा नमस्कार। राम बहादुर राय साहब जी, माननीय मंत्रीवर अब नहीं है, नरेंद्र सिंह तोमर जी, वो बहुत अच्छा दिशा निर्देश दिया है। और मेरा फ्रेंड खुशवंत जी, बहुत दिन के बाद देख रहा हूँ तोबड़ा। और सच्चिदानंद जोशी, अरुण जैन जी, सभी को मेरा नमस्कार। और मैं पहले आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, अभिनंदन देना चाहता हूँ। जो शुरू किया है 2 साल पहले, जो तीसरी सरकार अभियान का, वो मल्टीप्लाई होते 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 अब तक पहुंचा है। जो कोरोना पैंडेमिक समय में भी छोड़ा नहीं है, उसको कंटिन्यू करते रहा। और my special thanks to Mr. Prawn and Arun Jain for the support of this initiative. आप सब लोगों को पता है कि जो पंचायतों का जो सशक्तिकरण, जो मंत्री वर्य ने कहा है कि सशक्तिकरण और सुशासन, गुड गवर्नेंस और स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पंचायत सिस्टम, 2 एलिमेंट्स, वो तो करते रहना ही चाहिए। देयर इज नो एंड फॉर इट, इट हैज टू कंटिन्यू एंड वी आर ओनली इन द बिगिनिंग, और शुरुआत में ही है। उसमें जो एफर्ट चाहिए वो एफर्ट होना ही चाहिए, कंटिन्यू होना ही चाहिए। मैं अभी जो समय मुझे दिया है, मैं वो आत्मनिर्भर भारत और ग्राम पंचायत, ये दोनों चीजों को जोड़ना चाहता हूँ। मुझे ये समझना है कि ग्राम पंचायत एक व्हीकल है जो आत्मनिर्भर भारत अचीव करने का। जो आत्मनिर्भर भारत हम जो बोल रहा है, जो सेल्फ रिलायंट भारत, सेल्फ रिलायंट भारत माने हर पंचायत, हर गांव सेल्फ रिलायंट होना ही चाहिए, तभी हम आत्मनिर्भर भारत को हम अचीव कर सकते हैं। ये आत्मनिर्भर भारत जो अभियान शुरू किया है हमारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, is a long term objective, and it is also an aspirational objective. ये कल हम अचीव करने का सोच नहीं है। ये मेरा हिसाब से कम 5-6 डिकेड्स का एक एफर्ट होना चाहिए। 50 to 60 years ऑफ प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन और एफर्ट होना चाहिए, तभी हम शायद हम अचीव कर सकते हैं कि जो सेल्फ रिलायंट जो भारत हम सोच रहा है। तो इज ए एस्पिरेशनल लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, ये हमारा मन में रखना चाहिए। और दूसरा, सेल्फ रिलायंट माने सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है। हर गांव में अपना जो चीज चाहिए वो सेल्फ सफिशिएंट होना है, और दूसरा गांव का जो डिपेंडेंसी होना नहीं है, वैसा नहीं है। My understanding is, and I wish that should be the way forward, that the जो local resources है, natural resources हो, human resources हो, उनका जो पोटेंशियल है उस गांव में, उस पंचायत में, हम गांव मतलब पंचायत का ही जिक्र कर रहा है, पंचायत में उस रिसोर्सेस का पोटेंशियल को हम पूरा कैसे हम हार्नेस कर सके। That should be the objective, harnessing the full potential of the natural resources and the human resources. That is the way forward. इस प्रयास में there is another angle, that is strengthening the governance and of course improvement of panchayats, and all those efforts have to go on, will continue to have to happen, that should be continued by various agencies. But
to achieve Atmanirbhar, self-reliant Bharat, I think the vehicle is going to be the Gram Panchayat. Gram Panchayat shall be the vehicle for achieving Atmanirbhar Bharat. That's what my the vision for this whole scheme of things. And हम ग्राम पंचायत को एक व्हीकल का रूप में हम देखा गया तो ग्राम पंचायत और जीपीडीपी, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जो 4-5 साल पहले शुरू किया है, वो जो केरला में पीपल्स प्लानिंग कैंपेन का रूप में शुरू किया था, और ऑल इंडिया लेवल पे जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने शुरू किया है, दैट इज अनदर प्रोसेस which is available for the Gram Panchayats to move towards Atmanirbhar Bharat, GP, Gram Panchayat Development Plan. और इधर मैं और एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं. ग्राम पंचायत alone may not be a geographical unit. ग्राम पंचायत may not be the adequate unit. इसलिए मैं कहता हूं कि एक हायर लेवल पे, क्लस्टर लेवल पे हम सोचना चाहिए. क्लस्टर which is formed by taking maybe 5 to 6 or 7 or 8 पंचायत जो जियोग्राफिकल एरिया का बेसिस पे लेना चाहिए, जो वाटरशेड का बेसिस पे एक क्लस्टर बनना चाहिए. वो क्लस्टर शुड बी द यूनिट. उसका सब यूनिट होगा ग्राम पंचायत. When we talk about Atmanirbhar Bharat, when we are looking at enabling self-reliant Bharat, we have to look at कौन सा प्रोडक्ट्स हम इस क्लस्टर से हम तैयार कर सकते हैं. इस प्रोडक्ट्स को, प्रोसेसेस को, सर्विसेज को हम कैसे हम इस क्लस्टर से हम निकाल सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं. So it has to be a cluster basis. And इस क्लस्टर पे, क्लस्टर का ही नहीं है, जो पंचायत में हम देखते हैं, करीब 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ केरला में और NIRD में. पंचायतों से, पंचायत का लीडरशिप से मैं क्लोजली कनेक्ट रहा हूँ. मुझे ये महसूस हुआ है कि the major deficit is the professional deficit, प्रोफेशनल सपोर्ट डेफिसिट जो ग्राम पंचायत को. और हम जब क्लस्टर का कहे, क्लस्टर का लेवल पे भी जो प्रोफेशनल डेफिसिट है, वो डेफिसिट को बिना फिलअप करे we cannot think of moving towards Atmanirbhar Bharat. That professional deficit has to be filled up. इसलिए हमने NIRD में शुरू किया है 100+ cluster, thanks to Arun and other CSR agencies. 100 odd clusters को शुरू किया है, by filling up that professional deficit in the form of filling the professional deficit in the form of providing a young fellow, trained young fellow, a very charged, self-confident and socially motivated and connected to the रूरल लैंडस्केप. वैसा ही एक यंग फेलो को तैयार करके उस क्लस्टर ऑफ पंचायत में हम इंट्रोड्यूस किया है. वो दे विल बी द बैकस्टॉपिंग मैकेनिज्म फॉर द ग्राम पंचायत. दे विल बी सपोर्टिंग, दे विल बी कैजोलिंग, दे विल बी मेंटरिंग, दे विल बी सपोर्टिंग, बट पीछे से, नॉट, दे विल नॉट बी इन द फोरफ्रंट में पंचायत लीडरशिप रहेगा, उसका फोरफ्रंट में पंचायत का लोग रहेगा, ग्राम सभा रहेगा. ग्राम सभा इज द फर्स्ट, देन ग्राम पंचायत लीडरशिप, एंड देन दिस यंग फेलोज. We have to fill up that professional deficit in the form of ग्राम पंचायत. और तीसरा मेरा सुझाव ये है कि अभी GPDP 2.5 लाख 250,000 ग्राम पंचायत में GPDP हो रहा है, बट उसका क्वालिटी हम संतुष्ट नहीं है. बहुत सारा स्टडीज किया है, बहुत सारा पर्सनली देखा है कि वो ग्राम पंचायत प्लान्स दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल बुक व्हिच हैज बीन रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज. उस क्वालिटी को इंप्रूव करने का एक स्पेशल एफर्ट चाहिए, स्पेशल अभियान चाहिए. वो उसमें ये यंग फेलो शामिल
शामिल होना पड़ेगा। वही स्ट्रेटजी है जो 100+ क्लस्टर में जो NIRDPR का एफर्ट में जो शुरू किया है। एंड आई एम हैप्पी टू से दैट द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करके GSA में 250 क्लस्टर्स को सैंक्शन किया है। 250 क्लस्टर्स का प्रोसेस अभी चल रहा है, उसका यंग फेलोज को चुनने में और उसको एक्टिवेट करने में, विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द SIRDs, विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, and of course the NIRDPR is the fulcrum of all these activities. But इसमें मेरा एक एडवाइस है, since Kushwant is here, इस 100+ क्लस्टर में the major strength is the freedom to change, the freedom to choose the strategy depending on the local situation. एक क्लस्टर में एक स्ट्रेटजी होगा, वही स्ट्रेटजी दूसरा क्लस्टर में काम करेगा नहीं करेगा पता नहीं है, उसको असेस करके वो स्ट्रेटजी को चेंज करने का जो फ्रीडम चाहिए वो फ्रीडम होना चाहिए। हम गवर्नमेंट में ऐसा करते हैं कि एक रूल बुक बनाते हैं, वो रूल बुक यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट करते हैं, उससे we may not be able to achieve. So that freedom should be available at the NIRDPR level to choose the strategies, to choose the paths, and the broad contours, of course, the Ministry of Panchayat Raj can monitor and then usko follow कर सकते हैं। So वो freedom to choose, freedom to change, that strategy should be the major soul of this 100+ cluster program or cluster development program which NIRDPR has introduced. और चौथा मेरा ये कहना है कि जो क्लस्टर हम सोचते हैं, now when we want to move to Atmanirbhar Bharat, to arrive at those products, those services which can be made, brought out from that cluster, so we have to look at the potential of the local resources. Local resource माने not only land, water, jungle and all those things, but the human resources, especially in the present circumstances where financial constraints are so huge, both at Government of India, at state government, because of corona pandemic. So the other resources like the human resources is going to be it's a big, huge resource which we have to tap. Then wonders can happen. So we have to identify those resources, and based on those resources, what type of products and services can emanate from that cluster, and what type of infrastructure support, what type of professional support is required for that cluster has to be identified with the help of Young Fellow, and of course the close link with the CSR and NIRDPR and of course the ministries, and provide that professional support to these clusters at cluster level by creating the common infrastructure. And ultimately through this common infrastructure should be on a business mode, not as a freebie or subsidy, one-time subsidy and all, but can we make this whole infrastructure as a business entity and involve maybe 4 or 5 youngsters who can run that common infrastructure. Maybe one unit of that infrastructure, let's say a training center, can we make a training center also as a profitable enterprise in that locality? So can we enable a group of youngsters to run that, maybe some other activity? So we have to look at that, and I think Mr. Arun Jain's competency in design thinking to arrive at what type of this common infrastructure should be, how many enterprises can be created based on the local resources and human resources have to be derived and then formulate as a project and then go ahead with the implementation. Mera panchwa, the fifth item which I want to say is to move towards Atmanirbhar Bharat. Government ka resources dependence, of course, there is a limitation, and not only in terms of quantity, in terms of rule book also. There are so many stringent, we cannot blame anybody. There are so many things, and that approval, this approval, so many other things. But ये इधर मैं चाहता हूँ कि जो CSR का जो एफर्ट है, एंड मेरा रिक्वेस्ट मिनिस्टर पंचायत राज से है और माननीय मंत्रिवर्ग से है, जो CSR का जो पैसा हम मोबिलाइज कर सकते हैं
वो investment should get into supporting the professional hand holding, like supporting the young fellows, supporting, let us say, identification of supply chains which are feasible from that cluster or group of clusters. So जो CSR का जो गवर्नमेंट में से ये इनपुट्स हम लेना मुश्किल होगा, क्योंकि उसके लिए और एक स्कीम बनना पड़ेगा, देन दैट इज ए वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस, उतना समय नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो CSR का the like-minded people, well-meaning people, large number of people are there despite the corona pandemic going down the business, slump in the business. Maybe after another 5-6 months or 1 year, things are going to look up. So there's going to be a large scope to tap that, and the ministry should take the initiative of connecting those CSRs to link to this initiative. And that support should come in the form of professional support, professional human resource support. Panchayat mein, in the last 10-15 years of my experience, the major deficit is that professional hand holding support. सेक्रेटरी है, सरपंच है, लेकिन वो 5 साल के है, सेक्रेटरी 3 साल का रहेगा, फिर ट्रांसफर होगा। कई राज्यों में 5-10 पंचायतों को एक सेक्रेटरी है। ये पूरा डेफिशिएंसीज हम फिलअप करने के लिए करना है, पैरेलली होना है, लेकिन वो होने के लिए और 10 साल लगेगा, 20 साल लगेगा, उस तक हम वेट नहीं कर सकते। सो इसलिए हम इस गैप को जो CSR से हम भरना पड़ेगा। I think that should be the way forward. What exactly I am looking at? 250,000 panchayats. I am looking at much bigger scale, 250,000 panchayats. Even if I take, let us say, 5 panchayats in one cluster, 50,000 clusters, 50,000 into 5, 250,000. So 50,000 clusters, 50,000 clusters into, let us say, even if I take annually about 5 lakh rupees of investment, I'm talking about 2,500 crores for filling the gap of that professional deficit at the cluster level, and of course at the panchayat level, through the cluster level to the panchayat level. 2,500 crores, I think, is not a big deal for either the Ministry of Panchayat Raj or Ministry of Rural Development, plus the CSR, some part of the CSR. And of course, we may not take all at one go. We can phase it out. Fortunately, I think 3-4 years back, we started with big bang by the Ministry of Rural Development, the concept of the weakest, lowest panchayat. We selected the panchayats, but that got only limited to the data collection, and then data enabling the data to the panchayats. We did not move forward. Antyodaya scheme, which we have started, but that got limited to only data collection. So we should move forward. So what I am asking is only 2,500 crores, 50,000 clusters, and plus, of course, supporting the backup, supporting professional support, and we can take under Unnat Bharat Abhiyan the higher education institution support, the IIMs, IRMA, or management institutions, or the large number of organizations like PMI, Project Management Institute, who are willing to support to projectize our ideas, concepts, and then take forward in the form of projects. So that is another area which we have to move forward. और दूसरा मुझे ये कहना है कि a great requirement of sensitizing different levels of officials, and of course CSR agencies and NGOs at the state level and at the government of India level. हम कह रहा है कि पंचायत is very important, पंचायत, GPDP and all. कितना principal secretaries, कितना additional chief secretaries of panchayat holding the fort of panchayat have in their heart belief that the GPDP is the way forward? I doubt. Based on my interaction, I strongly feel that maybe we cannot blame anybody. They're busy with their own things. We have to sensitize. We have to take such people who have that flair, belief in panchayat.
And I strongly believe that Panchayat, through Panchayat, is only the way forward for our Atmanirbhar Bharat. That's what my strong feeling I want to say that. So great amount of sensitization is required. And in addition to, of course, the governance and other improvements, we have to take care of these things. Or finally, I think a little bit different arrangement. Abhi NIRDPR is the fulcrum which is happening, which is taking care of this cluster approach and so on and so forth. But again, leadership keep changing, and then different prioritization will come. Can we make this whole approach free from the risk of changing leadership? So basically, I want to flag the issue. Mr. Khushwant is there, and Mr. Arun and the like-minded people are thinking of IPF, Indian Panchayat Forum. Indian Panchayat Forum of strengthening the Panchayat leadership. अभी हम जब गांव में जाते हैं, पंचायत सरपंच से बात करते हैं, वो निराशा से embedded into that the helplessness, lack of confidence है, हम क्या कर सकते हैं? They never realize that the Sarpanch is the chief minister, prime minister for the Gram Panchayat. How can we lighten, how can we ignite that confidence? That as Arun keeps telling that Sarpanch is like a CEO of a big company. So how can we bring that enlightenment, bring that ignition to these leadership, which requires not through government channels alone. And I think a separate forum, and I think Indian Panchayat Forum, I request Mr. Khushwant to invite Mr. Arun some of these days, once it opens up for travel, should have a detailed deliberation how IPF, which has been already registered, and with the involvement of like-minded people who has a soul and flair for the panchayats, who believe in panchayats, I think should request Mr. Sunil to have a dialogue with Mr. Arun and his group, and support IPF. And IPF should go around and create that ignition among the local panchayat leadership. And that will be the starting point. And then GPDP, professional GPDP, it will happen with the help of young fellows. And then that GPDPs get integrated at cluster level. It has to be cluster. Atmanirbhar Bharat cannot happen through panchayat directly. It has to be a bigger area, cluster level, and then see what products, what services can flow from that, what are the professional support required for that, and then build up. And then, of course, build up the supply chains, build up the marketing system. And I'm sure this approach can definitely take us nearer to self-reliant India in large number of areas. I'm not telling that we should be 100% self-reliant, 100% self-sufficient. No, large number of areas, and resulting in that effort will create a huge amount of employment in the local panchayat, local area, in terms of food processing, in terms of quality, in terms of maybe organic and so on and so forth. I think we'll be killing many birds with this approach. And I request all the people who are here should ponder over these ideas and take them forward in this fashion, so as to achieve the aspiration. I'm not telling that Atmanirbhar Bharat is a target which we are going to. I'm telling this is an aspiration which we should dream for achieving that aspiration. And it's not a short term. It has to be a long term. It can only be a long term. I think we should be planning for maybe at least 50 years long term to reach that self-reliant, as we are seeing many other countries like South Korea, Japan, and so on and so forth. We can do with this approach. Thank you. Thank you very much for patience. Thank you.